अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है नॉर्मल वीडियो से। पहले वीडियोस जनरली जो मैंने अभी तक बनाई हैं दे आर रिगार्डिंग गैजेट्स एंड ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। आज जिस सब्जेक्ट पे वीडियो है बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसका जो ताल्लुक है वो बेसिकली एजुकेशन से है। सो बेसिकली मेरे साथ मौजूद हैं सैयदा जोना सल्जूक, माई डॉटर। तो शी इज़ स्टडिंग इन थर्ड सेमेस्टर इन लम्स। चुनांचा ये वीडियो जो है बेसिकली इसमें हम जो F.Sc के बाद या ए लेवल्स के बाद जो ट्रांजिशन है, आजकल आपको पता है कि काफ़ी कंपटीशन हो गया है और प्रोसीजर्स और रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। तो बीइंग आवर एल्डेस्ट चाइल्ड तो हमें तो नहीं पता था, तो हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा और काफ़ी धक्के खाने के बाद फिर लाइक वी लर्नड अ लॉट। So we thought that we should share our experiences और जो की एलिमेंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, तो इसमें हम जो कवर करेंगे बेसिकली दैट वुड बी आपने ए लेवल या F.Sc कर लिया या कर रहे हैं, तो उसके बाद वाइल फोकसिंग ऑन ह्यूमैनिटीज ओनली। देखें, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल है उसके लिए तो सबको ही पता है कि वो एडमिशन टेस्ट होता है और जो प्री रिक्विजिट्स हैं, मगर उसके अलावा जब आप ह्यूमैनिटीज़ में आते हैं तो अगर आप बाहर जाना चाहें तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आइल्स करना होता है, सैट करना होता है। आइल्स और सैट की पिक्युलरिटीज़ क्या हैं, उसके अंदर किन चीज़ों का ख्याल करना है। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़, स्पेसिफिकली लाहौर पंजाब में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, उनकी रेटिंग कैसी है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और आखिरी सेक्शन में हम लम्स को फोकस करेंगे कि लम्स में सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और सेफ जोन सिलेक्शन के लिए या एडमिशन के लिए क्या होता है और किन चीज़ों को ख्याल रखना होता है। सो जोना, वेलकम। तो आप ये बताएं सबसे पहले कि आप ने वी स्टार्ट विद आइल्स एंड सैट। तो सबसे पहले आइल्स के लिए बताएं, आपको आइल्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट किनको रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान में तो आई प्रिज्यूम कि नहीं है, बाहर रिक्वायर्ड है। किनको रिक्वायर्ड है, क्यों रिक्वायर्ड है, और ब्रीफली सिर्फ बता दें कि उसका स्कोरिंग क्या है, मैक्स कितने में से स्कोर होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। So there are like 4 sections to it. There's listening, then there's reading, then there's writing, and there's speaking. Each of them has a band of 9. Overall, it's a band of 9. I got 8 out of 9. Uske alawa, where is IELTS required? IELTS is required for students who apply abroad. Then there is 2 categories for IELTS. There is a general training and then there's academic. Obviously, you're applying to a university, you're going to go for academic. If you're going for a job, or if you're applying for a visa, so it's going to be general training. All right. और नाउ कमिंग टू SAT, जिसको सैट कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा हवा है। सैट जो है बेसिकली इट्स सैट 1 एंड सैट 2। तो सैट 1 किस पे अप्लाई होता है, सैट 2 किस पे अप्लाई होता है जनरली। तो ये दूसरा, सैट का स्कोर किस तरह होता है, सैट में कितने हिस्से होते हैं, उर्दू होती है, अरबी होती है, इंग्लिश होती है, मैथ्स होती, क्या होता है उसके अंदर, उसमें क्या होता है उसके अंदर। उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या रिसोर्सेज हैं और कौन सी अकेडमीज़ हैं, ये कैसे प्रिपेयर करें, और आप ये जवाब दे देंगे तो सैट के बारे में फिर मज़ीद मैं आपसे पूछूंगा। Okay. So SAT is basically just a method for universities to judge the same different students with the same grades. SAT mein there's like 4 different categories. There's writing, then there's reading and writing, then there is maths, and then there's an essay section as well. SAT in Pakistan, there are obviously different universities. It is required. NAMS ke liye to obviously hai. If there's GK ke liye, NAST ke liye, LSE and Kinnaid and BNU don't require SAT. They have their own entry tests. As far as it's concerned कि कहाँ से करना चाहिए, SAT is basically ऑनलाइन रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होती हैं. वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्सफुल साइट इज़ खान अकेडमी, where you just log in, you set up an account, it has different quizzes, etc. उसके अलावा another resource that I used was College Panda SAT English and Maths. It's really really helpful.
And then I went to tutorial by Talal Ali Jan. It's in Gulberg. He's an amazing instructor, and उन्होंने भी वही books use की थी, and yeah, that's it. और सेट का टोटल स्कोर कितना होता है और कितने में से स्कोरिंग होती है? Okay, so its total is 1600, Okay. and it's obviously then broken down into different parts. आपका कितना स्कोर था? I had 1300. मैंने दो दफ़ा दिया था. पहली दफ़ा I got 1160 and दूसरी दफ़ा I got 1300. अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब मैं ए लेवल्स में हूँ फॉर एग्जांपल, और जून और जुलाई में, अब तो एक कोविड की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट जून और जुलाई में जनरली एग्ज़ाम होते हैं ए लेवल्स के, CIs के, Yeah. जो कि पाकिस्तान में जो फाइनल्स होते हैं उसके बाद फिर लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो अगर जून जुलाई में मेरे CIs हैं तो सैट के लिए, क्योंकि अब वो लोड होता है एक F.Sc के एग्ज़ाम्स का या CIs का, तो सैट के लिए आइडियल टाइम क्या है? हम CIs के बाद दें, CIs से पहले दें तो कब दें? Okay, so obviously, if let's just talk about LUMS abhi, so their application process usually starts by the end of October, the start of November, and khatam hota hai jaake January mein. So obviously, universities, whether Pakistan or international universities, they require you to have your SAT beforehand. However, with an exception, LUMS does give us an option कि हम March में भी दें. लेकिन उस वक्त it's very risky because a lot of the children already got their admissions का उन्हें पता चल जाता है कि अगर हुआ या नहीं हुआ. And it's best if you actually start preparing for it like after your O-levels, or you start preparing for it like A-levels के बिल्कुल start में, and it's better if you give it in your first year of A-levels. One most important thing, आपने A levels के शुरू में दे दिया या A1 में दे दिया, Yeah. तो उसकी सर्टिफिकेट मिल गया आपको, आपका स्कोर भी बड़ा ज़बरदस्त आ गया 1400, आप उसकी वैलिडिटी क्या होती है स्कोर की? Validity is basically 5 years for SAT and 2 years for IELTS. 2 years for IELTS, ठीक है। अच्छा जी, सैट आपने दे दिया, IELTS दे दिया, अब लेट्स ट्रिकल डाउन टू द यूनिवर्सिटीज़। तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं कि आपने इंटरनेशनली किधर अप्लाई किया और लोकली किधर अप्लाई किया? पहले इंटरनेशनली बता दें किधर अप्लाई किया, एंड डिड यू गेट थ्रू और नॉट, व्हाट वाज इट लाइक, हाउ मच वाज इट गोइंग टू कॉस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अच्छा, जहाँ आपने अप्लाई किया, पहले इंटरनेशनल पे फोकस करते हैं, उनका जो था सिलेक्शन या प्रोसीजर जो भी था, टेस्ट था, इंटरव्यू था, जो भी था, वो क्या था? तो पहले आप इंटरनेशनल को बताएं। Okay, so international universities में I applied to Hong Kong University HQ, and ये सॉरी टू कट यू ऑफ, ये इसकी रैंकिंग क्या है, किधर ऐसी है कोई? no, so HQ is basically one of the most renowned universities within Asia and the world, obviously, as well. So I applied to HQ for law. I didn't get admission over there. Till what level did you reach? आपका कोई इंटरव्यू हुआ, कोई टेस्ट हुआ? Yeah, so basically HQ के there's like 3 different the first one's where you just submit your documents and everything, and आपके predicted grades पे they actually decide कि होना चाहिए या नहीं. And then the second stage is basically जहाँ का interview होता है based on those predicted grades, and the third and the last interview, the last stage is basically जहाँ के final grades पे आपका decision होता है. So I got in through the first 2 stages, and आखिरी stage में जिसमें final grades आते हैं उसमें नहीं हो सका मेरा, तो obviously like एक तो हांगकांग यूनिवर्सिटी होगी, then there was Middlesex University दुबई में मैंने अप्लाई किया था for law. Their application process is fairly easy. All you have to do is make an account, give your details, etc., and then you eventually receive an email approximately after a week or so, जिसमें they tell you कि अगर आपका हुआ admission या नहीं based on your predicted grades once again. And scholarships वगैरह का जहाँ तक है, that's obviously on your final जो grades आपके मिलते हैं. The third one is HULT. I applied to HULT as well. HULT का थोड़ा सा was HULT, where is it? It's basically in different places in the world. I applied to the one in UK. There's in China, Japan, etc. और भी जगह पर है. So HULT का थोड़ा सा मुश्किल process था. Their stages, number 1 was basically where they obviously asked my documents and stuff, such as my OA levels grades, my LORs and stuff.
Second was where मेरा interview हुआ था, and then the final is where they allot you a coordinator. They sort of like take an interview as well. That depends from person to person. And then उसके बाद मेरा admission हो गया था. I remember correctly कि जो आपका इंटरव्यू था, हल्ट में जो पहला इंटरव्यू था, Yeah. that was taken by Indian guy. Yeah. Yeah. I do. Yeah. तो हल्ट में फिर आपका हो गया. Yeah. हो गया तो did they offer you any scholarship etc? Yeah, they did actually offer me 100% academic scholarship. लेकिन now if you might be wondering कि मैं वहाँ क्यों नहीं गई, so reason ये था कि Middlesex में भी I got a 50% academic scholarship, लेकिन उसके बावजूद the total cost जो पड़ी थी that was around 1.5 to 2 crore, so we obviously couldn't afford it, so then we left that option out. All right. Now coming to the local scenario. तो लोकल सिनारियो में आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया? अब मतलब ज़ाहिर है आप यू वर नॉट गोइंग टू बिकम एन इंजीनियर और डॉक्टर, उसको हट के एमबीए है, फिनांस है, आर्ट्स है, जितनी भी फैकल्टीज हैं, लॉ है, तो आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया? Okay, so I applied to LUMS, NAST, Okay. INAID, LSE, yeah. LUMS, NAST, NAST, LSE, and- CNED, yeah. तो कोई छोड़ा नहीं? अच्छा, तो रिजल्ट क्या निकला फिर? किधर फेल हो गई, कहाँ पे हो गई? I got admission in all of them. All of them. Okay, माशाल्लाह माशाल्लाह. तो अब स्टार्ट करते हैं. लम्स का एंड में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद कनेट. Yeah. कनेट का क्या प्रोसेस है? Okay, CNAID, once again, it's fairly easy. CNAID में सिर्फ ये that I mean, is that because you got through इस वजह से? No. I mean, like, as compared to LUMS and their application process, LUMS का application process was very tedious, like in CNAID ka isn't. All you have to do for CNAID is you just need to keep up with their deadlines because they're pretty strict with that. उसके अलावा there is this online form that you need to fill out, and then you need to go and submit the processing fee. उसके बाद then based on your documents वगैरह जो उन्होंने पहले मांगे थे, then you get an email, and then उसके बाद they give you date and stuff. आपका interview होता है, and then after the interview, after approximately a week, you get to know कि अगर आपका admission हुआ है या नहीं. अच्छा, अब इसमें जो कनेट में, क्योंकि देखें जो हमने हल्ट की और सिंगापुर वगैरह की बात की, हांगकांग की बात की, वो तो खैर एक छोटा सा सेगमेंट है, बट मेजॉरिटी जो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो कनेट और नास्ट और इन जगहों पे अप्लाई करते हैं. तो हाउ वाज द इंटरव्यू लाइक? ज़ाहिर कनेट इज़ फॉर बच्चियों के लिए, तो उधर इंटरव्यू कैसा था? कि वाज इट टफ? व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे केम अप विद एंड ऑल दैट? पैनल कितना बड़ा था? So since I applied for economics over there, their head of the department, their principal, and there were 2-3 other instructors like part of the department as well, economics के जो वहाँ थे. And the questions that they basically asked were obviously why you're applying to CNAID, A-levels के उन्होंने grades वगैरह देखे थे, those were the documents that we were supposed to bring there as well. उसके अलावा they asked me about the other universities I applied to. They asked me about आगे मैंने क्या करना है, about my extracurricular activities and stuff, and yeah, that's practically it. Okay, so you got the answer after 1 week? No, I didn't. मेरे साथ ये हुआ था that उसमें से there were like 4 people in the panel. तो उसमें से one of them, she did her masters from LUMS as well. So the head of the economics department and the principal जो basically थी उधर, right after looking at my transcript, they're like आपका admission हो गया है, and there were like actually other girls as well who came out और उनको नहीं पता चला था. मुझे like उन्होंने उसी पे बता दिया था कि हो गया. So the funny thing is कि the person who did her masters from LUMS, she's like नहीं, अगर आपका LUMS में हो गया आप LUMS please चली जाना. Well, the other 3 were like नहीं आप please हमारे पास CNAID में आना. Alright, now we move to NUST. Yeah. NUST में मुझे याद है कि we made a couple of trips to Pindi also. Yeah. टेस्ट वेस्ट के लिए. उसका बताएं, उसका काफ़ी. और मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है, नस्ट इज़ बोथ इस को एजुकेशन है, तो वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद कनेट के मुकाबले में नस्ट में बहुत ज़्यादा लोग थे. इट वाज वेरी टफ टू गेट इन. तो नस्ट के एग्ज़ाम का पेपर का उसमें मुझे याद है कि वो उनकी टेस्ट की प्रिपरेटरी क्लासेस भी होती थी, कोई उनका स्पेसिफिक टेस्ट होता है कोई, तो उसकी अलग से क्लासेस लेनी पड़ती हैं जो हमें नहीं मिली थी. तो ओपन सोर्स से ही आपने तैयारी की थी. तो हाउ वाज इट लाइक एंड
How did you get into NUST? Okay, so NUST का जो entry test is basically NET or NET. उसमें ये that obviously for people who go into engineering and stuff, the classes that you're basically talking about वो उन्हीं लोगों को मिलते हैं. Like if I'm not wrong, तो maybe KIPS वगैरह और उधर से for humanities and stuff, there practically are no resources that we could refer to. Like obviously बाकी fields की they have a lot of options to which they could refer to. So let's just break down the entry test. उसमें there's an English section and there's a general knowledge or intelligence section जो बहुत छोटा सा, that's I guess 20% if I'm not wrong, and then there's a math section as well. It's more like SAT I would say, but a lot more difficult than SAT because SAT has बहुत ज़्यादा उसमें it has defined. Yeah, exactly. जबकि उसमें NET में is basic. It's more like F.Sc based कि बच्चे actually find it like a lot easier as compared to A-levels or O-levels kids. उसके अलावा you obviously उसका भी process is for applying for the test is they have their dates on their website. You go and make an account, you submit the fee, and then you obviously have to make a trip to Islamabad, or they have like particular centers तो हर में उनका test नहीं होता. Yeah. ठीक है. अच्छा, फिर आप लास्टली जहाँ पे आपने अप्लाई किया था वो LES था? नहीं, LSC. LSC, सॉरी. LES तो लॉन्ग है. Yeah. ओके. LSC के अंदर भी बहुत लोग थे, मुझे याद है, और बड़ी लाइन में लगे थे हम लोग इंटरव्यू के लिए. तो ठीक है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करा दिया आपने. वहाँ पे तो साइट वाइट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. उनका एंट्री टेस्ट था. सॉरी, उनका अपना एंट्री टेस्ट था. एंट्री टेस्ट था. या एंट्री टेस्ट था, उसके बाद फिर इंटरव्यू भी था. इंटरव्यू था. तो एंट्री टेस्ट में क्या था? Entry test was practically the worst entry test जो मैंने आज तक अभी तक की है. It was basically maths था, उसमें there was English and there was an essay. मतलब it was a very like not refined part of SAT basically कह लें. Yeah. And what was the interview like? The interview was pretty easy, but मेरे लिए तो they basically asked me वही same general questions के why did you apply to LSE, what degree did you apply to, and they asked me about other universities as well. मेरे साथ थोड़ा सा different हुआ था because they eventually found out that I am applying to LUMS as well. So उस वक्त तक when I gave my interview for LSE, so उस वक्त तक LUMS का admission का मुझे नहीं पता चला था कि हुआ या नहीं. Okay. So they started asking questions around that, and there were a few questions that were pretty tricky as well. तो उसमें थोड़ा सा I wasn't sure कि हो जाएगा या नहीं. But वैसे overall like the interview was pretty much on a lighter note. So there were more questions regarding my life and my interests rather than studies and stuff. I remember वहाँ पे उनके प्रिंसिपल बैठे हुए थे या ओनर बैठे हुए थे. He left a very loose remark कि आपके फादर किधर काम करते हैं. अच्छा, उनके पास तो बड़ा पैसा होगा. So that was kind of very unprofessional. Okay. So वहाँ पे भी खैर आपका हो गया. ठीक है ना, बहुत पैसे का साथ. अच्छा, तो अब आ जाते हैं जनाब अली वो जो मेन है. उससे पहले रेट्रोस्पेक्ट में थोड़ा सा ये आपसे मैंने पूछा ही नहीं कि ठीक है आपको हर जगह एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया. What was your score in A-levels? What subjects क्या थे A-levels? Okay, so my subjects in A-levels were business, economics, law, and literature. 4. Yeah. And the requirement is for 3. Yeah, but usually we will choose 4. Well, yeah. तो इसमें क्या grades थे आपके? I got 1 A star, 1 A and 2 Bs. Good. अच्छा, और SAT का स्कोर आपने बता दिया, इसका बता दिया. अब आ जाए लम्स के. अच्छा, लम्स को अगर आप सिंपली पहले ये बता दें कि अक्टूबर में उसके एडमिशन स्टार्ट होते हैं हर साल. रफली, ठीक है ना. आपको वेबसाइट देखनी पड़ती है और सारा. बट आप ये बता दें कि जो लम्स के बेसिकली एडमिशन के कितने पार्ट्स हैं. पहली बात इंटरव्यू तो नहीं होता. इंटरव्यू नहीं. अच्छा, उसके कितने पार्ट्स हैं? एक डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, पार्ट 2 पार्ट 3, कितने पार्ट्स हैं? फिर एक एक पार्ट का हम डिस्कस कर लेते हैं. Okay. So LUMS का admission process is like थोड़ा सा different as compared to other universities. The entry test is basically SAT is considered the entry test. उसके अलावा the LUMS has its own portal and there are like different requirements उसमें that you need to fill out. So that's basically their main admission
thing through which they actually judge the student. Usme se, like if we actually talk about what that portal has and the requirements, usme there are different things such as LORs, your letter of recommendations, your personal essays, your SAT scores, your extracurricular activities, your grades. Those are the things that are required. Uske अलावा that's the only thing that you need to do. The thing is कि ये जो मैंने भी चीज़ें list down की हैं, they sound like pretty easy. लेकिन thing is that they require a lot of time. So which is why it's like sort of like a bit tedious and different from the other universities. Basically from what I understand is कि डॉक्यूमेंट्स तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, डॉक्यूमेंट तो वही होंगे. ए लेवल की ट्रांसक्रिप्ट होगी, ओ लेवल्स की होगी, मैट्रिक होगा, एफएससी होगा, जो भी होगा, बेफॉर्म होगा, आईडी कार्ड होगा. उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो पर्सनल एसे, वो भी पोर्टल पे ही करना है आपने. यानी आपका फिजिकल पर्सनल कॉन्टैक्ट कोई नहीं है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस. उसके बाद फिर आपके एलओआर्स हैं. तो सबसे अगर मैं इसको वेटेज दूं, और सेट है, ठीक है. सो यू हैव द ग्रेड्स, you have LOR and SA and you have SAT. So अगर मैं कहूँ कि 33% into 3, 33, 33, 33 इस तरह की वेटेज है, या किसी एक पार्ट की ज़्यादा है, या इट्स एन अननोन थिंग, उनको ही पता है. Okay, so when I was applying for LUM, so I asked my student counselor and a lot of other people who actually got into LUM. So even the people at LUMs, हर बंदे के different opinion था कि नहीं SAT का ज़्यादा होता है, नहीं A-levels की grades का ज़्यादा होता है, नहीं personal essay का ज़्यादा होता है. So it's like something that LUMs hasn't disclosed. They never will, obviously. So I think मतलब you should try your best in all. अच्छा, A-levels के अगर grades की बात करें, यानी ABC, तो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? जो मिनिमम रिक्वायरमेंट को छोड़ दें, सॉरी, लेट मी रिफ्रेश, आप कितना आपका ग्रेड हो तो आप सेफ जोन में हैं. It's obviously going to be A's and A stars for your final as well. Like in their minimum requirement for your final grades, for example, I got 1 A star, 1 A and 2 B's. So उनकी minimum वो है, like you can get 1 or 2 B's as well final उसमें, final grades में. तो लेकिन but obviously safe zone is obviously A's and A stars. Alright. दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो आपका सेट है, सेट का कितना स्कोर हो तो आप सेफ जोन में. It's obviously going to be SAT ka ye that once again I've seen people with 1160s and 1170 जो लम्स में बैठे हुए. Then I know people with 1500 SAT scores and 1400 SAT scores जिनका भी लम्स में एडमिशन नहीं हुआ. लेकिन just for safe zone I would say 1300 and above. Alright. is. अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एंड लेट्स ट्राई टू रैप इट अप क्विकली, पर्सनल एसे. पर्सनल एसे एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई गाइडलाइन नहीं है, वो एक हवा में चीज़ है, हर एक का डिफरेंट होता है, तो एंड उसकी वेटेज भी बहुत है. तो वो किस तरह बनाना चाहिए एंड हाउ टू गो अबाउट इट? Okay, so personal essay does require a lot of time. It's something that you need to think about and jot down पहले आराम से बैठ के. So personal essay is basically where you tell the university as to why they should select you. How are you different from other students that are applying for the same program and the same university? And so basically, if you go and search it up on the net, though, obviously, like for example, if you go up for your CVs and stuff, so there's obviously like a particular format that you're supposed to follow. What generalized किस्म का होगा. लेकिन LUMs, along with other international universities, do require personal essays to be like personalized. And उसमें, for example, what I did was I sort of like mixed my interests and things that my family taught me over time and how I incorporated that into the degree I selected at the end. So हर बंदे का वो different होता है and they're just like some pointers that you need to follow. Alright, पर्सन ऐसे तो बना लिया, अब हम जाके लम से तो नहीं पूछ सकते सर ये कैसा पर्सन ऐसे पास हो जाऊंगी. तो आप उसकी गेज क्या है, किस तरह गेज करें यार, आपने बनाया है इट्स टच एंड गो, फेल या पास, तो क्या किधर से वेट कराएं, क्या करें? Okay, so the best thing that you could do is you obviously ask for guidance from your student counselors or teachers that you're very close to. And if you maybe cannot get into contact with any student counselor or any teacher, so you could always ask some person in your family to read it as well. Lekin best obviously ye ki teachers they
do know what's going on in the market as well. And I would say that if they give you a rating of like 7.5, 8, or 9, so it's a good personal essay. All right. Lastly, wanting to go to LUMS, dreaming of going to LUMS or JICI or CNAD or LSC, सारे बराबर ही हैं. I mean, you know. So, but joining LUMS and attending LUMS, पहले क्या व्यूज थे, ख्यालात थे, और जाने के बाद क्या हुआ? Okay, so यूनिवर्सिटी से पहले while I was in A-levels, like बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि यूनिवर्सिटी में चली जाओगी जिंदगी बन जाएगी, आगे कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा. When the thing is, जब LUMS admission हो गया, so the people who studied at LUMS, they started saying वही लोग थे, they were like बस LUMS आओ सब कुछ सही हो जाएगा. And the moment I got admission into LUMS, they're like जरा आओ ना तो पता चलेगा LUMS. I mean, obviously for host lights, the experience is like pretty different. I wish I was a host light as well. Like I'm not. Day scholars, so obviously it's pretty different as well. The overall experience. उसके अलावा the सारी पढ़ाई वगैरह and everything is obviously very very competitive at LUMS. तो उसकी वजह से the thing that I learned over time in LUMS is कि first semester में I literally got to a point जहाँ it actually started affecting my health as well. तो वही वाली बात आ जाती है that you need to create a balance in everything. And if you stress यहाँ like GPA is like something that like people keep talking about 24/7. So there are people who बहुत like 1% से भी कम होंगे who don't really care about their GPAs, but लोग कहते हैं कि they don't care about their GPAs, but obviously people do. So at the end of the day, it's very competitive, and you just need to remember to keep a balance. थैंक यू सोना. व्यूअर्स, वांटेड टू, आई होप कि ये थोड़ी सी बेनिफिशियल होगी आप लोगों के लिए ये वीडियो. तो इट वाज बेसिकली जस्ट ट्राइंग टू encompass the journey from A levels and ending up in a good university or any university for that matter. तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें. एंड until next time, thank you.